Okay, sorry about that. Yeah. So basically, I was saying कि last we जो हम question कर रहे थे, paper कर रहे थे, उसमें भी जो first question था, if I remember correctly, वो binomial का था, and we just saw कि that happened to be the case. Anyway, okay, so let's just get straight to it. It says find the coefficient of x cube in the expansion of 1 plus kx into 1 minus 2x to the power. Sorry, the coefficient of x cube, not find the coefficient. You're given the coefficient of x cube in the expansion is 20, and what you have to do is you have to find the value of the constant k. अच्छा अब देखो, as far as 1 plus kx is concerned, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इस पे तो power 1 है, so that means इसको ना expand करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जहां तक बात है इसकी 1 minus 2x to the power 5 की, इसमें मुझे बताओ कौन कौन से कोएफिशिएंट्स हमें निकालने चाहिए so that we can get the coefficient of x cube. Question for you guys. सर x क्यूब का और x पावर 2 का x स्क्वायर का. या इसमें हमें निकालना चाहिए x क्यूब का कोएफिशिएंट और इसमें हमें निकालना चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. क्यों? ताकि 1 x क्यूब के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके वी कैन गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब और kx जो है वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाए एंड देन वी कैन गेट द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी गोना डू. ओके, सो इफ आई वांट, सो माय फोकस राइट नाउ इज एंटायरली ऑन 1 minus 2x to the power 5. जरा जगह देख लेते हैं कितनी दी हुई है. हाँ, बहुत जगह है, बहुत ही जगह है बल्कि. Okay, so if I want the coefficient of x cube, मैं r की जगह क्या रखूंगा? In fact, let's start with x square. If I want the coefficient of x square, तो मैं r की जगह क्या रखूंगा? Question for you guys. Say 2. Yeah, if I want the coefficient of x square, मैं r की जगह रखूंगा 2. So that means I'm looking at 5c2, 1 raised to the power 5 minus 2, which is 3, and minus 2x raised to the power 2. And then if I want the coefficient of x cubed, तो मैं r की जगह रखूंगा 3, so 5c3, 1 raised to the power 5 minus 3, that's 2, and minus 2x raised to the power of 3. Okay, so let's work this out. 5c2 होता है 10, but just to be on the safe side, let's work it out. So 5c2 multiplied by 1 को ignore कर देते हैं, minus 2 को square करोगे तो 4 आएगा. So that means you're looking at 40x square. And then अच्छा, overall sign जो होगा minus होगा, so it's best that I put a minus sign first. 5c3 is 10, 10 multiplied by 8 is 80x cube. Okay, now this is basically being multiplied by 1 plus kx. So 1 को I'm going to multiply with minus 80, so I'm looking at minus 80 x cube, and kx को I'm going to multiply by 40, so I'm looking at 40k x cube. Now, according to the question, not according to me, the coefficient of x cube is 20. So if I just scrape off the coefficients, so that means I'm looking at minus 80 plus 40k, and this is equal to what? This is equal to 20. So I'm looking at 40k is equals to 20 plus 80, which means 100, which means I'm looking at k is equals to 100 upon 40, which basically means that I'm looking at 100 divided by 40, so that's 5 upon 2 or 2.5. ठीक है, so ये आ गई हमारे पास k की value. Just to be on the safe side, let's check the answer and see if it's good. In the meantime, आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को समझ आया? Any questions? Anything you guys want to ask? Yeah, so k is equals to 5.2 is the correct answer. Very clear. Clear? Okay. What about the rest of you? Hassan, Saleha, Iman, all good? सर ये वाला चैप्टर मैंने मिस कर दिया था, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी. आपने वो अपलोड कर दी है? जी जी, रिकॉर्डिंग सारी अपलोडेड हैं. ये आसान टॉपिक है, इसको जल्दी कैच अप कर लो. ठीक है, इट्स वन ऑफ द इजियर टॉपिक्स. यस सर वो मैंने देखी थी, लेकिन इस चैप्टर की तो नहीं मुझे मिल रही. किस डेट की है? ये हमने ठहरो, I think this we did before circular measure, or was it after circular measure? ठहरो एक सेकंड, अभी देख लेते हैं. Before था. Before circular measure? Okay. क्योंकि उसके बाद हम trigonometry की तरफ आ गए थे ना, तो Yeah, you're right. Yeah, so this we did after APGP. ये ना कोई हमें 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में हमने कवर किया होगा, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है. So this we did after trigonometry, after APGP and before circular measure. फिर मैं देख लूंगी. ठीक है, देख लेना. नहीं तो वैसे तो इसकी रिकॉर्डिंग्स फॉर श्योर हैं, लेकिन अगर ना मिले तो you can always check them out on my YouTube channel. ओके.
अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं फिट, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। ओके, अब आगे APGP. It says the first, second, and third terms of a geometric progression are 2p plus 6 minus 2p and p plus 2. Okay, so this is a geometric progression. You're given the first, second, and third. Okay, p is positive. Okay, so why did the question feel the need to tell us that p is positive? We'll find out later on. It says find the sum to infinity. Sum to infinity का formula याद है आप लोगों को? Again, I know formulas given होते हैं, but फिर भी याद होना अच्छी बात है. What's the formula for A upon 1 minus r. A upon 1 minus r, absolutely. Okay. अभी अगर ये geometric progression है, so what can we say about this geometric progression? Considering कि first term है, ये second term है और ये third term है. If this is a geometric progression, एक चीज इसके बारे में मैं for sure कह सकता हूँ, which will also help me, by the way, which will also help me find out the value of p. What is that? Say the common ratio. The common ratio. So usulan T2 upon T1 is equal to T3 upon T2, right? Because it's a geometric progression. इस तरह से common arithmetic progression में difference same होता है, which is the common difference. इस तरह से geometric progression में आपका ratio same होता है, which is the common ratio. Okay, so I'm looking at minus 2p upon 2p plus 6 is equal to p plus 2 upon minus 2p. So this is the point where you cross multiply, and now it makes sense why the question felt the need to tell us that p is positive, because we're likely, in fact, we will end up with a quadratic equation, and we're likely to end up with two values of p, and we will only consider the value that's positive. Okay, so minus 2p times minus 2p is positive 4p squared. Isko I would suggest not to multiply directly. First write it down, and then multiply. So you're looking at 4p squared is equals to p times 2p is just equal to 2p squared plus 6p plus 4p plus 12. So let's shift everything over to the left hand side. So I'm looking at 4p squared minus 2p squared. 6 plus 4 10 हो जाएगा, left side पे जाओगे तो minus 10p minus 12 is equals to 0. So I'm looking at 2p squared minus 10p minus 12 equals to 0. Up, just to save some time, I'm going to do this in my calculator. 2 minus 10 minus 12. तो p की एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 और एक वैल्यू आ रही है हमारे पास -1. बताओ कौन सी कंसीडर करेंगे? Obviously 6 वाली करेंगे. ठीक है, अच्छा. अब हम एक काम करते हैं, हम जो सारी टर्म्स हैं वो निकाल लेते हैं. तो पहली टर्म हो जाएगी हमारी 2 times 6 plus 6, सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी -2 times 6 और थर्ड टर्म हो जाएगी हमारी 6 plus 2. ठीक है, all I'm doing is plugging in 6 in place of p. So 2 times 6 is 12, 12 plus 6 is 18, minus 12 और फिर आ रहा है हमारे पास positive 8. अब फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई कितनी 18 मिल गई. कॉमन रेशियो चाहिए तो कैसे निकालेंगे? -12 upon 18, which means that the common ratio is equals to -2 upon 3. Now that you have the first term and also the common ratio, put it all together and find out the sum to infinity. So you're looking at 18 over 1 minus -2 upon 3, which basically means that you're looking at 18. अब ये मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, जरा टाइम बचाते हैं. 18 over 1 plus minus plus हो गया 2 upon 3. So I'm looking at 54 upon 5, which basically means 10.8. Okay, terminating decimal, so we can write it in decimal. Okay, so fairly easy question again. Okay, not too difficult. In fact, not difficult at all. How would you guys rate this? इसका difficulty level क्या rate करेंगे आप लोग? Honestly. Sir, 2 out of 5. इसका कुछ तो 2 out of 5, right? Yeah, that's what I thought. Fairly easy. अभी तक तो आसान है. कितना आपका 9 marks और ये कौन सा पेपर है? ये अक्टूबर नवंबर 2020 लास्ट ईयर का. बिल्कुल. तो इसे आप YouTube पे डालेंगे? हाँ, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं YouTube पे भी डाल दूंगा. चलिए सही है. ठीक है. Okay, so it says the equation of a curve is y is equals to 2x squared plus m bracket 2x plus 1, where m is a constant, and the equation of the line y is equals to 6x plus 4. ये भी आसान question, by the way. Show that for all values of m, the line intersects the curve at two distinct points. Okay, intersects the curve at two distinct points से क्या याद आया? Greater than 1. No, not So greater than 0. Discriminant. The discriminant is going to be greater than 0. अच्छा, अब देखो, सुनो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि you're supposed to find the range of values where the line intersects the curve at two distinct points, or maybe is tangent, or maybe does not intersect.
in some questions, like in this one, you're supposed to show that it will always, regardless of whatever the value of m is, you need to show that it will always intersect the line. The line will always intersect the curve at two distinct points. अब ये सवाल करने से पहले समझो कि होगा क्या सवाल में. सवाल में ये होगा कि हम वही डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. अब हमारा एक्सप्रेशन इस तरह का आना चाहिए कि हम उसको देख के बता सकें कि हाँ यार ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. Like for example, what if we end up with, I don't know if that's the case or not, but let's say if we end up with m square plus 9. ठीक है, अब m square plus 9 के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये हमेशा क्या होगा? I'm not looking for a value, I'm looking for whether it's going to be negative, whether it's going to be 0, or whether it's always going to be positive. ये expression as a whole, m square plus 9, ये हमेशा हमेशा क्या होगा? फिर हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि m भले 0 ही क्यों ना हो जाए, +9 ने आके क्या कर देना है, +9 ने आके कर इसको पॉजिटिव कर देना है. ठीक है, सो शो वाले सवाल में और फाइंड वाले सवाल में ये फर्क होता है. ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज हम शो करने जा रहे हैं. सो दैट मींस वी आर ईदर गोइंग टू एंड अप विद अ वैल्यू which will basically prove the fact that yes, the discriminant is greater than 0, or we will end up with an expression जिसको हम देख के बता देंगे कि हाँ यार this is always greater than 0. ठीक है, okay, now let's see what exactly the deal is. So सबसे पहले तो हमने दोनों को equate कर देना है. ठीक है, so ये हो जाएगा आपका 6x plus 4 is equals to 2x square plus 2mx plus m. Now we're going to write it nicely. तो ये हो जाएगा 2x square plus 2mx minus 6x plus m minus 4. Okay, now equals to 0 equals to के बजाय let's write it equals to 0. Okay, उसके बाद let's take x common. तो हो जाएगा 2m minus 6, x common निकाल लिया हमने, plus m minus 4 equals to 0. So a is equals to 2, b is equals to 2m minus 6, and c is equals to m minus 4. Okay, so we're going to do b square minus 4ac is greater than 0. So that means 2m minus 6, the whole thing square, minus 4 times 2 times m minus 4 is greater than 0. अब ये हम शो करेंगे कि ये वाकई is always greater than 0. ठीक है, let's see what the deal here is. So ये हो जाएगा आपका 4m square, 2 into 6 into 2, so that's 24m plus 36. 4 times 2 8 हो जाएगा, so that means minus 8m plus 8 times 4 is 32 is greater than 0. Okay, so I'm looking at 4m square minus 32m, और 36 plus 32 हो जाएगा आपका 36 plus 32 is equals to 68. Okay, now अब एक काम करते हैं, पहले तो देख लेते हैं अगर इसको इसमें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सिंप्लीफाई हम बिल्कुल कर सकते हैं. m स्क्वायर माइनस 32 डिवाइड बाय 4 इज 8, m प्लस 68 डिवाइड बाय 4, so that's 17 is greater than 0. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, how will I further prove? ठीक है, we've ended up with an expression, but how will I further prove कि ये जो है ये हमेशा greater than 0 होगा? How will I prove the that? complete square form. Yes, so it's one way to do that. In fact, the best way to do that, ठीक है, not one way, the best way to do that would be to do it through completed square form. ठीक है, so completed square form में करने के लिए हम पहले लिखेंगे m square minus 8m plus 17 को थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं और greater than 0 को भी थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं. अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 4 स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम -4 स्क्वायर करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे कर रहे होते हैं तो वही करते हैं जो इक्वल्स टू के साइड पे कर रहे होते हैं, बट बिकॉज वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, सो जो लेफ्ट हैंड जो इस साइड पे कर रहे हैं इसी साइड पे उसका ऑपोजिट भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे. ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4 स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो 4 स्क्वायर माइनस भी करोगे ताकि इक्वेशन में बैलेंस रहे. सो आई एम लुकिंग एट m minus 4 द होल थिंग स्क्वायर, और 17 minus 4 स्क्वायर होता है 16, 17 minus 16 करोगे, सो दैट्स 1 is greater than 0. अच्छा, अब इफ आई हैव अ लुक एट दिस, ठीक है, इसको अगर मैं गौर से देखूं, m minus 4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 1, तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 4,1. 4,1. सो 4,1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहेगा. पॉजिटिव रहेगा. और वैसे भी अगर हम m minus 4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 1 को देखें, ठीक है, फॉरगेट कि ये क्वाड्रेटिक कर्व, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए क्वाड्रेटिक कर्व. अगर आप सिर्फ m minus 4 द होल थिंग स्क्वायर प्लस 1 को देखोगे तो m minus 4 द होल थिंग स्क्वायर की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है.
और फिर जब उसमें +1 करोगे तो दैट मीन्स इस कम से कम जो वैल्यू होगी इसकी वो हमेशा क्या होगी, उसकी हमेशा 1 होगी, ठीक है। सो अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे m-4 द होल थिंग स्क्वायर विल ऑलवेज बी greater than or equal to 1, therefore p square minus 4ac will always be greater than 0। ठीक है, चाहो तो पूरा स्टेटमेंट लिखो या चाहो तो इस तरह, मतलब चाहो तो वो इनइक्वालिटी करके लिख दो या चाहो तो ऐसे लिख दो, will always be greater than 0, ठीक है। which basically means कि लाइन जो है वो हमेशा कर्व को, भले m की कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, वो हमेशा कर्व को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, समझ आया? जी सर, आगे समझ। Yes, sir. ओके अच्छा, अब देखो, दिस क्वेश्चन कंटेन्ड one question of APGP and here's another question of APGP, ठीक है। Let's see what it says. It says the अच्छा, by the way, वो GP का था, ये AP का है। It says the sum Sn of the first n terms of an arithmetic progression is given by Sn is equals to n squared plus 4n. The kth term in the progression is greater than 200, ठीक है। Find the smallest possible value of k. Okay, अब ये एक arithmetic progression है और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास to find out whatever term that we want to find out, ठीक है। Okay, sorry about that. Yeah, so as I was saying, we have the formula, ठीक है, for the sum. अब इस formula को use करते हुए, what if I want the first term and what if I want the second term? And once I have the first term and the second term, I will obviously eventually have the common difference also. So I'm asking you guys, how will you use the formula of the sum and find out the first term? Sir, n की जगह we'll put 1 and तो we'll get the हमारे first पास term. sum of first term निकलेगा, how will that help? Sir, sum of first term is equal to sum of first term. Is Is equal to the first term. ठीक है, सही है। So basically ये सुनने में हो सकता है कभी इनिशियली आपको थोड़ा अजीब लगे कि यार ये तो हम सम निकाल रहे हैं, हाउ इज दैट इक्वल टू द फर्स्ट टर्म, बट द थिंग इज पहली टर्म का सम will be the first term, ठीक है। So sum of the first term is actually equal to the first term. So S1 निकालते हैं, which means 1 का square plus 4 times 1, so that means S1 is equals to 1 plus 4, which is equal to 5. अब if I want the sum of the first two terms, ठीक है, you probably figured this out कि हम n की जगह 2 रखेंगे, so that means 2 squared plus 4 times 2, so that means I'm looking at 2 का square is 4, 4 times 2 is 8. अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास technically when I figured this first term, I also figured when I figured the sum of the first term, I also figured the first term. But अब मैं second term, so here's my question. How am I going to figure out the second term using this, ठीक है, and this? It is 12, you're right. समझ नहीं आई। It is 12, it is 12. 4 times 2 is 8, 8 plus 4 is 12. क्या नहीं समझ आया जहां, दोबारा बताओ। सर लाइक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। Okay, my question is कि देखो मेरे पास पहली टर्म है 5 है और मुझे पता है कि पहली दो टर्म्स का जो सम है वो 12 है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं सेकंड टर्म कैसे निकालूंगा? इट्स अ वेरी सिंपल सर वो क्वेश्चन। सम का फॉर्मूला लगाएंगे, उसे इक्वल टू हम कर देंगे 12 और फिर फॉर्मूला नहीं, देखो, अच्छा, let me write it in a way you'll be able to figure it out. So ये T1 है, ये T2 है। The first term is 5 and the sum of both these terms is 12. तो बता, how will I find out the second term? अब तो बता सकते हैं आप लोग। Sir, sum of second term minus sum of first term is equal to Yep. second term. दो टर्म्स को मिला के बन रहा है 12, जिसमें से एक टर्म 5 है, तो दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे? 12 minus 5, so that means that's equal to 7. अब समझ आया आपको, ज़हान and everyone else? Clear है? Yes, no? Like an answer, please.
Yes, sir, clear. अच्छा, अब मुझे बताओ, can you guys also tell me the common difference? Sir, +2. Common difference is +2. Okay. अब देखो, here's what the question says. The question says, अब एक काम करते हैं हाथ के हाथ. Let's figure out the formula for calculating the nth term. ठीक है, Tn. So Tn निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A plus n minus 1 times t. So Tn is going to be equal to basically 5 plus n minus 1 times 2. So that means कि कोई भी term अगर चाहिए है तो we can work it out using 5 plus 2n minus 2. That means nth term is equals to 2n plus 3. ठीक है. अच्छा, अब सवाल आपसे कह रहा है the kth term in the progression is greater than 200. ठीक है, find the smallest possible value of k. So that means इस पूरे progression में एक kth term है which is greater than 200 और हमने क्या करना है, हमने उसकी smallest possible value निकालनी है. अब हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि 2k plus 3 is greater than what? Is greater than 200. ठीक है. अच्छा, हम ये चीज equals to करके भी कर सकते थे by the way. ठीक है. In fact, you know what? चलो greater than करके ही कर लेते हैं. ठीक है, makes more sense. So 2k is equals to 109. Is greater than 197. 197, which means k is greater than 197 divided by 2, which means I'm looking at 98.5. अब मुझे एक बात बताओ, k is greater than 98.5. Considering that k is greater than 98.5, can you tell me the smallest possible value? 99. Yep, it has to be 99. क्योंकि k integer है तो obviously you can't settle with 98.5. ठीक है, term जो होती है हमेशा कोई integer होती है. So smallest possible value greater than 98.5 has to be 99. So 99 is our final answer. अब बताएं, मुझे समझ आया? Any questions? Anything you guys want me to जी go? सर, आगे समझ. Okay, sounds good. चलिए जी, functions का सवाल आ गया. It says functions f and g are defined by f of x equals to 4x minus 2. G of x is equals to 4 upon x plus 1. Find the value of f of g of 7. चलें एक काम करें. I want you guys to try and do part A at least. ठीक है, जल्दी से part A करें. हाँ, part A करें. I'll be back in a minute. ठीक है. Just getting some water. Okay. निकाला आंसर 0. Does everyone agree with that? 0 यार है सबका. Sir, I agree with that. Yes, sir, मेरा भी 0. चलें, if you guys say so. So g of 7 का मतलब कि we're going to do 4 over 7 plus 1, so that's 4 over 8. So g of 7 आ रहा है हमारे पास 4 upon 7 plus 1, so that means 4 upon 8.
which basically means 1 upon 2, and f of g of 7 हो जाएगा हमारा 4 times half minus 2. So that's 2 minus 2, which means it's equal to 0. ठीक है, good job. Then it says find the, okay, now we have a not a difficult question, but हाँ lengthy जरूर है. क्या मतलब painfully lengthy सवाल आ गया हमारे पास. कोई बात नहीं, let's do it. So ये दो कॉलम्स मैंने इसलिए बनाए, एक मैंने बनाया f इनवर्स के लिए, एक मैंने बनाया g इनवर्स के लिए. So f इनवर्स के लिए we'll do y is equals to 4x minus 2, और g इनवर्स के लिए we'll do y is equals to 4 upon x plus 1. Okay, now x को सब्जेक्ट बनाते हैं. Y plus 2 equals to 4x. Let's write this nicely. 4x is equals to y plus 2. X is equals to y plus 2 upon 4, which means f inverse of x is equals to x plus 2 upon 4. अच्छा जी, यहाँ पे भी यही करेंगे. xy plus y equals to 4. xy is equals to 4 minus y. X is equals to 4 minus y upon y, which means g inverse of x is equals to 4 minus x upon x. ठीक है ना? फिर करना है इन दोनों को equal. अच्छा, notice how it says find the values, which makes sense now because we're likely to end up with a quadratic equation, which means we're likely to end up with two values. So x plus 2 upon 4 is equals to 4 minus x upon x. Cross multiply kya? X square plus 2x equals to 16 minus 4x. ये हो गया x square. Minus 2x plus 4x is plus 2x minus 16 equals to 0. Just to save some time, as always, I'm going to use the calculator to work it out from here. So I'm looking at 1, 2, and minus 16. Okay. Decimal not. Let me check. फिर वो -4 plus 6 नहीं हो जाएगा? X square plus 2x. Yeah, you're right. You're right. Yeah, this makes more sense. Plus 8 and minus 2. So 2n x is equals to 2 or x is equals to minus 8. So yeah, 2n minus 8. Okay, so fairly simple question. ठीक है. Functions देखो, as long as आपका domain range, खैर domain range वाली चीज़ भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से हटके फंक्शंस की जितनी भी चीज़ें हैं आसान है. ठीक है. अच्छा, now we're looking at trigonometric identity. ये तो अभी हमने recently किया है. So just wait. Let's just wait for 2 minutes. यहाँ पे जरा अजान हो रही है, उसके बाद resume करते हैं. Okay. Okay. So I say transformation, I think you meant to say transformation after transformation. Like, is also easy, but when it's combined trigonometry, that with something scary. Yeah, you're right. You're right. It is easy overall, but what trigonometric is very dangerous हो जाती है. इस paper में भी, by the way, I think कुछ ऐसे ही हुआ, but it's not that difficult. Anyway, so it says prove the identity. Okay, so ये तो अब हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया, proving an identity. So let's see what we can do. So as I always say, okay, whenever you see tan x, your safest bet is always to turn it into sine and cos. So you're looking at 1 upon cos x minus sine x upon cos x, ठीक है, multiplied by 1 upon sine x plus 1. Okay. So now you're looking at 1 minus sine x, और LCM होगा आपका cos x, ठीक है. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि LCM ले लें sin x, और इसको कर दें 1 plus sin x. Okay, now quick question for you guys. What is 1 minus sin x into 1 plus sin x? बताएं भाई, what's 1 minus sin x into 1 plus? 1 फिर 1 minus sin square x. Yeah, a plus b into a minus b is a square. Is a square minus b square. So that means 1 ka square minus sine squared x. Now what's 1 minus sine squared x? Cos x. Cos squared x upon cos x sin x. Now cos squared x upon cos x sin x का मतलब कि डिनोमिनेटर में से cos हम कैंसिल कर सकते हैं और न्यूमरेटर में से cos square का square हटा सकते हैं. So now we're looking at just cos x upon sin x. Now we know from prior knowledge कि tan x बराबर होता है किसके, अभी हमने इस चीज को इस्तेमाल भी किया. In fact, we use tan x and turn it into sin x upon cos x. So if I write cos x upon sin x, so cos x upon sin x, अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहा हूँ,
So that means मैं यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करूँगा, ठीक है, तो cos x अपॉन sin x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan x का. So that means ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका 1 upon tan x. There you go. And then you can write the famous statement, hence proved. Okay, so fairly simple. That's the thing with identity. Just keep playing around, and at some point it will make sense, hopefully. Okay, then it says hence solve the equation. Achha. The question was very kind in the sense कि सारी मेहनत उसने हमसे करवा ली. Now it has just left us with this, and it's saying कि ये जो है ना, ये बराबर है किसके, ये बराबर है 1 minus 2 tan square x. Okay, now let me just turn off my WhatsApp. तो ये हो गया आपका 1 upon tan x is equal to 2 tan squared x, ठीक है, और रेंज क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है 0 से लेके 180 तक. अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आई एम लुकिंग एट 1 is equals to 2 tan cubed x, ठीक है. Now let's make tan cube x the subject. So tan cubed x is equals to 1 upon 2. Let's try this nicely. अच्छा, जगह यहाँ पे जरा थोड़ी कम है तो we should be more efficient, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं. And something you guys should also watch out for, जगह अगर थोड़ी कम हो तो just be as efficient as possible. So I'm looking at tan cube x is equals to 1 upon 2. अच्छा, अब when I take the cube root of 1 upon 2, so cube root का फायदा ये होता है कि cube root में आपका वो प्लस माइनस वाली चीज नहीं होती, ठीक है ना. क्यूब रूट में सिर्फ प्लस ही होगा, अगर माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है. So that means tan x is equals to the cube root of 1 upon 2. Okay, अब tan पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है जरा बताएंगे. Sir, 1 and 3rd. या 1 and 3rd. इसमें से हम कौन से को कंसिडर करेंगे. Sir, the first one. Just the first one. Okay, so let's see what alpha is equal to. So alpha के लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि let's find out the cube root of 1 divided by 2. So I'm looking at a certain value. Also, make sure your calculator is in degree mode. My calculator was in radian mode, I just realized. So you'll take the cube root, cube root, yeah, cube root of 1 divided by 2, and then you take tan inverse of the answer. So you're looking at alpha as 38.4. Okay. So now if you want the value of x, the value of x will just be 38.4 degrees. जो दूसरी वाली value उसको हम consider करेंगे ही नहीं because वो हमारी range से बाहर है, ठीक है. So let me just check the answer to be on the safe side. Yeah, 38.4 it is. ठीक है, तो समझ आया boys and girls? Is it clear? समझ आ गया. Yes, sir. आसान है ना P1? क्या ख्याल है? Even though we haven't done differentiation integration yet, but वो भी इतना मुश्किल नहीं है. हाँ, बहुत सारी चीजें उसमें, but it's not that difficult. Okay, so now we're looking at circular measure. ये सवाल हम कर चुके हैं. Looks very familiar. I think जब हम circular measure के topical questions कर रहे थे तो ये शायद मेरे उसमें compilation में था ये. But anyway, it says in the diagram ABC is an isosceles triangle with AB is equals to BC, okay, which is equal to R centimeter, and angle BAC is equals to theta radians. The point B lies on AC and ABD is a sector of circle with center A. ठीक है. So ये angle भी हमारा theta होगा by the way. सही है. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा एंगल क्या होगा तो क्या जवाब देंगे. In terms of theta, of course, you can't give me a value. 180 minus 2 theta. Yeah, 180 minus 2 theta. ठीक है, I don't know whether this is required or not, बस ऐसे ही मैंने निकाल लिया. Express the area of the shaded region in terms of R and theta. Okay. बताओ theoretically कैसे निकालेंगे area of shaded region. ABD का हम area of sector निकाल लेंगे, उसके बाद triangle का area से माइनस कर देंगे. Simple. So if I want the area of triangle मैं ऐसे निकाल सकता हूँ half into, basically this is what I'm using, huh? This is the information that I'm using. Half into R into sine of 180 minus theta. ठीक है. Let's write this nicely. There's not much we can do with it, but ये हो जाएगा आपका R square sine of 180 minus theta over 2. अच्छा, आप लोगों को याद है sin 180 minus theta किसके बराबर होता है? वो लेवल में याद करो. sin 180 minus theta किसके बराबर होता है? याद आ रहा है? Theta के.
साइन थीटा के, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग कि मैं क्या कह रहा हूँ, अपने कैलकुलेटर में साइन 30 की वैल्यू निकालें, ठीक है, और साइन ऑफ 180 माइनस 30 की वैल्यू निकालें। आई हैव अ होल वीडियो ऑन दिस बाय द वे, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज। तो you'll notice कि ये दोनों सेम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटी। So what you can do is supplementary angle identity. Sine of 180 minus अच्छा, by the way, ये sine of 180 minus 2 theta, I just realized, so can't use that identity. Okay, but do remember this identity anyway. Sine 180 minus theta is equals to sine theta. यहाँ पे ये apply नहीं हो रहा particularly because it's not sine 180 minus theta. In fact, it's sine 180 minus 2 theta. ठीक है। Now ये आ गया हमारे पास area of triangle. Now if I want to find out the area of sector, so what formula should I use here? Sir, r theta. half r square theta. Yeah, half r square theta. So ये half r square theta ही रहेगा because r तो r ही है, theta भी theta है. So together this becomes area of shaded region is equals to r square sine of 180 minus 2 theta upon 2 minus 1 upon 2 r square theta. ठीक है, अब इसमें you can do all sorts of things. You can take r square upon 2 common if you want. ठीक है, अभी मैं आंसर देख के बताता हूँ कि इसमें क्या किया हुआ है। खैर जरूरी नहीं है कि जो आंसर नहीं किया हुआ आपको भी आप ही वही करो, ठीक है। You can leave it because the question hasn't really asked you to simplify it or anything. So 180 minus 2 theta minus theta, that's it. ठीक है, let me check what they have done in the marking scheme. सर ये एरिया सेक्टर में गलत एंगल नहीं है? नहीं, क्यों गलत है? फिर एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका तो एंगल थीटा भी होना चाहिए। हाँ तो थीटा ही तो लिया, देखो थीटा नहीं लेके आना। सर नहीं, ठीक है, आई एम सॉरी सर, लगी समझ। ओके, अच्छा एक और चीज which I just realized by the way, वो ये कि हमारे जितने भी ये फॉर्मूलाज होते हैं उसमें जो आपका वो होता है अपना एंगल होता है किस मोड में होता है? सर रेडियन मोड में होता है। रेडियन मोड में होता है। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है? एक गलती है इस पूरे इसमें सोल्यूशन में, जो कि ना सर वो मैंने 180 को हमने लिखना था 2 पाई लिखना था, आई गेस। 2 पाई नहीं, सर फाइल या ये गलती है, ठीक है। क्योंकि वरना फिर आधी चीजें रेडियन में, आधी चीजें एंगल में। जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, वी ओनली यूज दिस फार्मूला व्हेन द एंगल इज इन रेडियन मोड, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दी। सर डिग्री टू रेडियन का क्या फार्मूला था? पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। into pi by 180, yeah. ठीक है, now it's fixed anyway. So yeah, there you go, ये हो गया हमारा। अच्छा, फिर it says in the case where r is equals to, ये समझ आया सबको by the way? Any questions in this? Anything which you guys नो want सर ये तो इजी है। to see? Then it says in the case where r is equals to 10 and theta is equals to 0.6, find the perimeter of the shaded region. Okay, so एक काम करते हैं, इसको पहले तो करते हैं clear, फिर इसको जरा नीचे एक पिक्चर ले आते हैं इसकी। Let's copy this and bring it over here. There you go. Okay, now r उसने हमें दे दिया और थीटा भी हमें दे दिया, ठीक है। तो एक दो चीजें तो हमारे पास बहुत आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। कौन सी दो चीजें बताएं जरा? सर ए बी की और बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की और बी सी की और बी डी की भी निकाल लेंगे हम एक्चुअली काफ़ी आसानी से, ठीक है। सो इन फैक्ट यू नो व्हाट, लेट मी कलर कोड इट सो इट्स इजी फॉर यू गाइस। लेट्स स्टार्ट विथ दिस रेड, जिसको मैंने रेड हाईलाइट किया। ये क्या है? ये बेसिकली हमारी आर्क लेंथ है एंड वी नो कि आर्क लेंथ जो होती है बराबर होती है s इज इक्वल्स टू r थीटा के। सो दैट मीन्स आर्क लेंथ इज गोना बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ठीक है। सो दैट मीन्स द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 10 times 0.6 is 6 centimeter. Okay,
फिर ये वाली लेंथ जिसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये तो आंखें बंद करके निकाल सकते हैं हम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10, सो द लेंथ फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि ये जो डी सी है इसका प्रोसीजर क्या होगा निकालने का? पुट सम थॉट इनटू इट एंड देन सर हम पहले AC निकाल लेंगे। एसी कैसे निकालेंगे ये बताओ। सर वो कोसाइन फार्मूला यूज कर लेंगे ना। यस यस यस, कोसाइन रूल। सो बेसिकली ये हमने निकाला था ना ये हमने निकाला था 180 बल्कि पाई माइनस 2 थीटा, राइट? तो अभी हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू 0.6, सो दैट मीन्स पाई माइनस 1.2। तो ये हो गया आपका 1.94, ठीक है। अब आप कोसाइन रूल लगाएं, ठीक है, एंड यू विल से ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर्ड प्लस 10 स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स कॉस ऑफ, अच्छा आई वुड प्रेफर कि आप कॉस ऑफ वही करो पाई माइनस 1.2, वो इसलिए कि हम राउंड ऑफ करने के चक्रों से बच जाएं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पेंसिल की बैटरी डेड हो गई है। आई एम जस्ट गोना रीशेयर माय स्क्रीन यूजिंग एयरप्ले। Yeah, okay. So cos of pi minus 1.2, ठीक है। Now let's work this out. Square root of 10 squared plus 10 squared minus 2 times 10 times 10 times, and make sure कि आपका calculator at this point is in radian mode, ठीक है। cos of pi minus 1.2। अब आगे मेरे पास AC which is equal to 16.5। अब मुझे बताओ मैं DC कैसे निकालूंगा? सर वो रेडियस माइनस कर देंगे ना, ADB रेडियस होगा। 5 minus 10, so that means I'm looking at 6.5 centimeter. Okay, so this length, and this length, I'm going to sum it up. So perimeter is equals to 6 plus 10 plus 6.5. So I have the perimeter now, so 6 plus 10 plus 6.5, so that's equal to 22.5 centimeter. Okay, any questions? लेकिन जरा इसको नो सर। मुझे बताएं, anything that you guys want to ask? सर इसको क्या रेट करेंगे आप? Easy, fairly easy. बस ये एक don't fall for this 180 minus 2 pi वाली चीज। वैसे I think I'll tell you guys what, even if you did fall for it in part A, I think part B में आके आप शायद realize कर लेते। I think अगर आप part A में उसको 180 रहने देते और आगे चले जाते और part B जब करते तब शायद आपको इस चीज का एहसास हो जाता कि आपने उसको 180 minus 2 pi नहीं करना, क्योंकि पाई जो है वो आपका रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। So I would say on a scale of 1 to 10, maybe 1 to 5, बल्कि I think 2 ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3। सर इन केस हम 180 लिख देते तो कितने मार्क्स कटते हैं? 1 मार्क तो चला जाता आपका, फॉर श्योर चला जाता। इस कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स है ना, 1 मार्क तो फॉर श्योर चला जाता। Okay. It says a circle has ये तो आसान है। Center at the point B 5,1 and the point A minus 1 minus 2 lies on the circle. Find the equation of the circle. Okay, so center हमारे पास है, radius कैसे निकालेंगे? सर वो डिस्टेंस वाले फार्मूला Distance लगा वाला। के आ जाएगा। So r square is going to be equal, अच्छा जब आप r निकाल रहे होते हो तो फिर आप स्क्वायर रूट लगाते हो, जब आप r स्क्वायर निकाल रहे हो तो फिर आपको स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। एंड बेहतर ये है, स्पेशली इन द केस ऑफ सर्कल, कि आप सीधा r स्क्वायर ही ले लो। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में इक्वल्स टू के बाद हमेशा r स्क्वायर ही रखते हैं। So 5 minus minus 1 squared plus 1 minus minus 2 whole squared. So r square is equals to 6 ka square plus 3 ka square. So that means 36 plus 9. So r square is equals to 45. So x minus 5 whole square plus y minus 1 whole square equals to 45. ठीक है, याद रखो प्लीज, equals to के बाद you only have r square. तो ये नहीं कि आप पहले r निकालो फिर आप उसको स्क्वायर रूट करो। I mean you will get the right answer, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, but you know why do so many steps when you can do it in less. Then it says the point AC is such that AC is the point C is such that AC is the diameter of the circle. The point D has coordinates 5,16. Show that DC is a tangent to the circle. Okay. अब अगर आप इस सवाल को इस तरह से मैं देखूं ना, तो honestly मुझे कुछ नहीं समझ आया, ठीक है? But it will make more sense when I make a rough sketch, ठीक है?
सो सेंटर है हमारा 5,1 पे। ओके 5,16 कहाँ पे होगा? राइट पे होगा, लेफ्ट पे होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा? हम सर ऊपर होएगा। ऊपर होगा, ठीक है। और ए जो है आपका ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बाय द वे -1 -2। सो ए जो है आपका थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और सी आपका इधर कहीं होगा, जाहिर है, ठीक है। ए -1 -2 है, सो लाजमी सी बात है उसके कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट पे और नीचे होंगे। और क्योंकि ए सी डायमीटर है, नॉट अकॉर्डिंग टू मी बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो दैट मींस वो बिल्कुल इन लाइन विद बी होगा, ठीक है। इट हैज टू बी, देयर इज नो अदर वे टू इट, ठीक है। और जहां तक बात है डी की, डी आपका यहाँ पे होगा, दिस इज पॉइंट डी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5,16। अब सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं शो दैट डी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कैन यू डू दैट? यस सर कर सकते हैं, हमारे पास मिड पॉइंट है वो बी है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के Yes, 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 yes. So मैं क्या करूँगा? I'm going to use the formula from midpoint, ठीक है? So the midpoint of A and C is B. Okay. So C के coordinates क्या है? नहीं मालूम. So we'll just write x and y. So x plus minus 1/2, comma y plus minus, तो minus ही हो जाएगा 2/2, और ये हो गया आपके 5,1, ठीक है। That means x minus 1/2 is equals to 5. तो x बराबर आ गया 11 के, y minus 2/2 is equals to 1. That means y बराबर आ गया 2 times 1 is 2, 2 plus 2 is 4. Okay. So ये आ गया हमारे पास c के coordinates 11,4. अब मुझे एक बात बताओ कि यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी कैन यू, इनफैक्ट अगर आपके सी के कोऑर्डिनेट्स नहीं भी होते तब भी आप ये काम तो जरूर कर सकते थे। आप ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए सी तो जरूर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके सी के कोऑर्डिनेट्स हो। बताओ क्यों जरूरी नहीं है? व्हाई डू आई डोंट नेसेसरली नीड टू हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इन ऑर्डर टू फिगर आउट द हमारे पास ए भी है ना। हाँ, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यू नो व्हाट, इनफैक्ट आई एम गोना गो विद ए एंड बी ओनली, ताकि अगर मैंने कहीं सी के कोऑर्डिनेट्स गड़बड़ कर दिया तो मुझे मजीद आगे गड़बड़ ना कर, मजीद आगे और गड़बड़ ना हो। सो आई विल डू 1 - -2 over 5 - -1. So 1 - -2 is 3, 5 - -1 is 6, sorry, not 4, it's 6. So that means it's 1/2. So gradient of line AC is equals to 1/2. अब मुझे एक बात बताओ, उसूलन gradient of line DC क्या आना चाहिए? -2 -2 आना चाहिए. Let's see if that's the case or not. Okay, so C के coordinates 2 के हम निकाल चुके हैं. I'm going to write them over here. 11,4 निकालना है ना. So let's see. So 16 minus 4 upon 5 minus 11. So 16 minus 4 is 12. 5 minus 11 is -6. So gradient of the line DC किसके बराबर है? -2 के बराबर है. अब आप ये statement लिख दें कि m of AC is equals to -1 upon m of DC. Therefore, DC is tangent to the circle at C. अच्छा, ये क्यों है? Why am I, ये मैं इस प्रॉपर्टी का सहारा क्यों ले रहा हूँ? ये अब जुहान ने जैसे कहा कि -2 आना चाहिए, तो क्यों -2 आना चाहिए? What's the reason behind? तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो -2 हो क्यों जाएगा। क्यों मतलब why should, Radius are perpendicular to each other, yes, or because the perpendicular property, negative. yeah. Now मेरी शेप थोड़ी सी आउट है तो उससे आपको लगेगा नहीं है, लेकिन the property says कि radius and tangent are should be perpendicular to the circle. खैर, anyway, you guys get the point, right? अच्छा, by the way, एक second. There's no reason why D should be on the circle. In fact, D should not be on the circle. Yeah, sorry, my bad. So ये है scenario. Yeah, this makes more sense. ठीक है, हाँ अब बोलो. तो यही था बस. यही था. I thought कि मतलब एक खराब है तो इस वजह से वो नहीं. line. ये this part we should have got, I mean I should have gotten right कि D has, it doesn't say anywhere कि D जो है वो circle की circumference पे. In fact, it can't be on the circumference of the circle because फिर वो tangent पे नहीं lie करेगा. फिर वो एक तो chord क्योंकि can't touch at one point, वो D Yeah. पे भी कर रहे, C पे भी कर रहे. वो फिर एक chord बन जाएगा. You're right. Then it says
the other tangent from D touches the circle at E. अब देखो D कहाँ है, बिल्कुल vertically above है, ठीक है, बिल्कुल हमने लास्ट क्लास में इससे मिलता जुलता ही सवाल किया है, इनफैक्ट काफी मिलता जुलता सवाल किया, I'm surprised कि उन्होंने वही चीज उठा के दे दी दोबारा। So D जो है वो बिल्कुल सर्कल के vertically above है, okay? Now अब एक बात मुझे बताओ, एक काम करते हैं बल्कि इसको as always let's take a fresh okay now अब सवाल आपसे कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अब ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज फार एज वन कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज कंसर्न, वो मैं और आप आंखें बंद करके बता सकते हैं, बताएं वो कौन सा कोऑर्डिनेट है। सर वो 4 है। वो वाई कोऑर्डिनेट है और वो 4 है, ठीक है। सो अब इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई सी, बल्कि उससे भी पहले लीव नो रूम फॉर डाउट, ओके। डी इज वर्टिकली above B, ठीक है, which means के EC is a horizontal line, ठीक है, that means के Y is equals to 4, मतलब E का जो Y coordinate है that's equal to 4। X coordinate कैसे निकालोगे? सर आप DC का वो ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल एंड थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर सही है। There's an easier way. There's an easier way. Sir, the x coordinate. Yes, x coordinate तो है, लेकिन थोड़ा आगे और elaborate भी तो करो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो। तो ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होएगा? ए का फिर तुक्का था वैसे। नहीं। दोनों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जो कि कॉर्ड का मिड पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर इसका 5 होगा। 5 होगा, ठीक है, बल्कि इस पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,4, क्योंकि वो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर है ना। अब देखो, अब ई का एक्स कोऑर्डिनेट गायब है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो 5 है ये मिड क्या पॉइंट वाले से हो जाएगा ना? मिड पॉइंट वाले से होगा, एब्सोल्युटली। सो बेसिकली x plus 11 upon 2 is equals to 5, which means x is equals to, वैसे आपका तुक्का सही है? कैसे लगा आपने तुक्का है, हमें भी बताएं। फिर वो डायग्राम देख के ऊपर नीचे बन रहा था। नहीं इतनी एक्यूरेट तो मैंने डायग्राम इत्तेफाक से बनाई है ना, ऐसा नहीं, आई डोंट थिंक सो। सिर्फ बस इत्तेफाक से तुक्का भी लग गया तो इस वजह से। खैर तुक्के पे रिलाई ना कीजिएगा, वैसे आपका तुक्का काफी स्पॉट ऑन था, बट डोंट रिलाई ऑन इट एंटायरली। एनीवे चलो ये भी हो गया, समझ आया सबको ये बाय द वे। और ये वाली चीज ये वाला ना, ये टॉपिक वाली आसान है। चीज, हाँ सॉरी, कुछ नहीं, मैंने कहा समझ आ गया। अच्छा ये वाली चीज जो है ना, जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, एंड मेक श्योर कि जब आप डायग्राम बनाओ ना, आई नो हम एक रफ स्केच बना रहे होते हैं, फिर भी ट्राई एंड बी एज नीट एज पॉसिबल। टेंजेंट लाइन बना रहे हो तो मेक श्योर टू मेक इट विद अ स्केल, सर्कल भी बना रहे हो तो मेक इट विद अ कंपास, और जरूरी नहीं है कंपास कोई बोतल के ढकने से बना रहे हो, ताकि ये क्या सही से समझ आए आपको, मतलब इट शुड बी, again it's a sketch, but try and be as neat as possible. I'm not saying as accurate as possible, but try and be as neat as possible, okay? So yeah, अच्छा वापस से डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया, इसको करते हैं स्किप। ओके फाइनली द क्वेश्चन दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर। ये सवाल मुझे थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, आई थिंक ये जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तब हमने किया था, बट खैर लेट्स जस्ट डू इट अगेन। सो वी आर लुकिंग एट 3 cos 2x plus 2 और x से 0 से लेकर पाई तक, स्टेट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ y। ओके सो मुझे बताओ इसका नया पीरियड क्या होगा cos 2x का? 180, which basically means pi, और हमारी x की जो रेंज है वो भी पाई तक ही है, दैट मीन्स एक पूरा साइकिल बन रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि 3 cos 2x
की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? सर हाईएस्ट होगी 3 और लोएस्ट होगी -3। और लोएस्ट होगी -3। अच्छा, अब जब मैं इसमें +2 कर दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ चली जाएगी? सर वो 5 पे चली जाएगी, मिनिमम -5 हो जाएगा। There you go. Maximum is equals to 5 and minimum is -1. So that means -1 to 5. ठीक है? अच्छा, let me quickly just to make sure check the answer. Yeah, 5 से लेके -1. Okay. अच्छा, लकीली फिर सवाल ने आपसे इसका स्केच भी बनवा लिया, तो कोई बात नहीं, हमें मतलब अच्छी बात है, हम इसका स्केच बना देते हैं। अब इसका स्केच बनाने के लिए आप लोग चाहो तो कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। अब कॉस वैसे तो पूरा बनता है आपका 2 पाई पे, लेकिन अब पूरा बनेगा आपका पाई पे, ठीक है। दैट मीन्स आधा साइकिल होगा आपका π/2 पे, ठीक है। और कॉस की आपको पता है कि जो बीच में जो वैल्यू होती है, जो आधे साइकिल पे होती है, वो सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है। दैट मीन्स π/2 पे ये होगा आपका जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, और हमने क्या निकाली थी -1। ओके, सो दिस शुड एटलीस्ट लुक लाइक इट्स -1। सो इसको हम एक काम करते हैं, या π/2 को जरा थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं और पाई को भी ऊपर करके लिख लेते हैं। ओके, सो ये आ गई आपकी -1, सही है। 0 पे ये होगा आपका 5, ठीक है। और जहां पे ये एंड होगा वहां पे भी ये 5 पे एंड होगा, बिकॉज यू नो दैट द ग्राफ ऑफ कॉस इज सिमेट्रिकल अबाउट द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सो दैट मीन्स द ग्राफ दैट वी आर लुकिंग एट is going to look like this. ठीक है। Again, if you guys want, you guys can do this with the help of a calculator also, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्केच है तो इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। अच्छा, फिर सवाल आपसे कह रहा है कि by considering the straight line, एक से दरवाजा बंद करो। By considering the straight line y is equals to kx, where k is a constant, state the number of solutions of the equation 3 cos 2x plus 2 equals to kx, k is equals to -3. अच्छा, मुझे बताओ कि -3x कैसी लाइन होगी? Is it going to be upward sloping? Is it going to be downward sloping? What kind of line are we looking at? Say downward sloping. downward sloping. और y intercept क्या होगा इसका? 0 होगा. So that means it's going to be, अच्छा let me try and color code this. So इसको मैं green से करता हूँ. So y equals to -3x आपकी ऐसी लाइन जा रही होगी। अब मुझे बताओ इस लाइन का जो कर्व मैंने बनाया हुआ है ब्लू से, कितने सॉल्यूशंस हैं? सॉल्यूशंस का मतलब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 0 है। 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। इट्स नो ब्रेनर, तो हमें ढूंढने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इट्स अंडरस्टूड के इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, फिर चलो ये तो हमने निकाल दिया। फिर है k is equals to 1. k is equals to 1 कैसी लाइन होगी? पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल होगी। नहीं, हम स्ट्रेट 1x कैसी लाइन होगी? Say अपवर्ड होगी। अपवर्ड स्लोपिंग तो होगी। और y इंटरसेप्ट क्या होगा? 0. 0, ठीक है। सो दैट मींस, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो हमारी लाइन है, इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे बताओ इस लाइन का इस लाइन के कर्व के कितने सॉल्यूशंस हैं? सर इसके 2 हैं। 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एक ये और एक ये। So that means, so right now we have how many solutions? We have 2 solutions. अच्छा, ऊपर मुझे लिखना था no solution, I'll write it right now. No solution. फिर it says k is equals to 3. अब k is equals to 3 माना is going to be an upward sloping line, लेकिन हमें इसके स्लोप का पता नहीं कि कितना अपवर्ड होगा। उसके लिए मेरा आपको मशवरा ये है, just to be on the safe side, आप एक काम करें, you know that the line is going to be y is equals to 3x, right? अब आप x की जगह y प्लग इन कर लें। Why? Because technically ये एक x कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। So if you plug in y, so y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3 multiplied by pi. So that means you're looking at 9.42 something. So that means when जब x pi के बराबर है, तो इस वाली लाइन में जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका 9 point something के बराबर है, which means कि ये कर्व के ऊपर है। तो अगर मैं इस लाइन को इस रेड वाली लाइन को
ब्लू वाले कर्व से कंपेयर करूं तो मुझे बताओ कितने सॉल्यूशंस हैं? सर इसमें सिर्फ एक सोल्यूशन है। इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, समझ आया आप लोगों को? जी सर आ गया समझ। अच्छा, अब आ रहा है आपका वो वाला सवाल, ट्रांसफॉर्मेशन वाला। आसान है वैसे ऑनेस्टली, ये इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले ये कभी दिमाग में नहीं बिठाना कि ट्रांसफॉर्मेशन है तो बस मुश्किल ही है, आसान नहीं हो सकता। दिस इज फेयरली इजी। इट सेज डिस्क्राइब फुली a sequence of transformations that maps f of x onto y is equals to g of x. Okay. So f of 2x, जब भी x किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो ठीक है स्ट्रेच तो होता है, लेकिन कौन सा स्ट्रेच होगा ये? इन विच डायरेक्शन? फिर हॉरिजॉन्टल Yeah, by so I'm doing a factor stretch in the x direction. Sorry, मैं x axis लिख रहा था, but stretch in the x direction. ठीक है। और स्केल फैक्टर जो होगा ना आपका, या स्ट्रेच फैक्टर, वो आपका 2 नहीं होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करो, रिमेंबर x के केस में सब कुछ उल्टा होता है। हाँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करो so that means आपका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो आपका हाफ है। अच्छा, अब फंक्शन के बाहर एक +4 है। सो अगर फंक्शन के बाहर +4 है सो दैट मीन्स ट्रांसलेशन तो है, चलो मान लिया, लेकिन ट्रांसलेशन कैसी है? इन द y डायरेक्शन और इन द मतलब वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। सर वर्टिकल है। सो दैट मीन्स x 0 है और y क्या है आपका? y आपका +4 है, ठीक है। x is 0 and y is +4। तो ये था आपका f of x into g of x। So you get 2 marks for this, fairly simple, ठीक है। x 2 से मल्टीप्लाई हुआ, that means stretch in the x direction, stretch factor आपका 1/2 और ट्रांसलेशन आपकी with matrix 0 and 4। अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं आपसे। आगे आपसे कह रहे हैं डिस्क्राइब फुली। हाँ हाँ बोलो। फिर अगर हम उसको ये ना लिखें कि along the y axis हम सिर्फ ये मैट्रिक्स That's fine, that's fine, क्योंकि मैट्रिक्स यही तो डिनोट कर रहा है कि ये x 0 है और y आपका 4 है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, फिर it says describe fully a sequence of transformation that maps y is equals to f of x onto y is equals to h of x। अच्छा, अब सबसे पहले जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है ना, आपने वो देखनी होगी, ठीक है। अभी हो रहा है ब्रैकेट में x में कोई चीज ऐड हो रही है, हमें पता है कि जब भी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है इट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। अब मान लिया कि ये ट्रांसलेशन है, सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ट्रांसलेशन तो चलो ये है, x में एक π/2 ऐड हो रहा है, तो मुझे बताओ हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? सर माइनस -π/2 n 0, ठीक है। और आपका पूरा फंक्शन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब है? स्ट्रेच स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच इन विच डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इन y डायरेक्शन, ठीक है। और स्ट्रेच फैक्टर इस केस में क्या होगा? y के केस में चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सो दैट मींस स्ट्रेच फैक्टर भी 2 ही है। आई थिंक मेरी स्क्रीन थोड़ी लैग कर रही है, खैर। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सो दैट मींस स्ट्रेच फैक्टर भी 2 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सो दैट मींस 3 है। x के केस में बस याद रखो कि उल्टा होता है। सॉरी जैन, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, नहीं, सर बस ये कहता कि वो स्क्रीन सही है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, सो दैट सरप्राइजिंगली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पेपर। आई थिंक वैसे पेपर में टाइम आपका सर ऐसे क्वेश्चन कल भी किया था हमने। ऊपर ऊपर कहाँ किया था हमने? ठहरो, लेट मी रीशेयर माय स्क्रीन। नहीं कल किया था। बिल्कुल हाँ, आई थिंक जो बच्चे मई जून 2020 का पेपर करके गए होंगे उनको तो मजे आ गए होंगे। अक्टूबर 2020 तो बिल्कुल मिलता जुलता ही है। वैसे once you do a handful of past paper questions you'll realize that they're all not all the same, but yeah, they're quite similar, क्योंकि आपके टॉपिक्स ही कितने, गिनती के तो आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। so there's not much that you need to remember, ठीक है। तो चलो anyway we're in time, I'll stop here। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अच्छा, पिछली भी जितनी क्लासेस हैं उसकी मैंने रिकॉर्डिंग्स कर दी हैं, आज ही मैंने अपलोड की हैं। मेक श्योर यू गाइस चेक देम आउट and you guys also keep practicing। next class में however we'll resume from differentiation integration, ठीक है। दो पेपर्स हमने कर लिया, आप लोगों की मिड ईयर की अच्छी प्रिपरेशन हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे differentiation integration, ठीक है। so I'll stop here, I will inshallah see you guys on Friday। yeah, tomorrow, ठीक है। so take care everyone, Allah Hafiz sir, thank you। Allah Hafiz। welcome।